अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हैं। आज अब मैं आपके लिए ये नया हैवी ब्राइडल ट्यूटोरियल लेके आई हूँ और ये एक और है जो एक मस्ट वॉच वीडियो है। इसमें मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगी कि ये हैवी ब्राइडल बेस कैसे करना है एंड आईज पे जो पिगमेंटेशन होती है उसकी कलर कैसे सही आप लेके आते हैं। Guys, I've got this new tutorial for you. It is a heavy bridal makeup tutorial and I'm going to show you how to get the pigmentation on your eyes and also how to create a flawless base. So carry on watching. तो यहाँ पे मैंने शुरू किया है ब्राइड आईब्रोज को एंड कैट वन डी की ब्राउ जेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने देखा है कितनी दफ़ा कि मैंने ये काफ़ी पिगमेंटेड प्रोडक्ट है तो इसको मैं काफ़ी लाइटली से लेके जाती हूँ एंड इसको ब्लेंड करके तो अपने आईब्रोज की शेप ले आती हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं थोड़ी सी टेप लगा रही हूँ क्योंकि इस दफ़ा मैं एक शार्प लुक कर रही थी। टेप जब आप लगाते हैं तो आपने इसका ध्यान रखना है कि दोनों ऑब्वियसली आपकी टेप्स लेवल है, नहीं तो आपका शेप सही नहीं आएगा। So I've started off with the eyebrows. I've just filled it in with a Kat Von D brow gel, and then I've added some sellotape, which gives me that straight edge. So you don't have to use this. There are other ways of doing this, but I find it quite easy to work like this. You've just got to make sure that when you add your tape to both eyes, they are level. Otherwise, the shape of your eye will be different. Gone in with my P. Louise base. I've just patted that in, and then I'm just carving out around the eyebrows, and then I'm going to blend all the harsh edges away. So पी लुइस का बेस इस्तेमाल कर रही हूँ एंड इसको मैंने अप्लाई कर दिया, आईब्रोज को कार्व कर लिया एंड अभी जो आउटर एजेस थे उनको थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। सो पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ पी लुइस का। यहाँ पे ये मैं डार्क सा कलर ले रही हूँ। अब इसकी आप प्लेसमेंट देखना मैं कहाँ पे लगा रही हूँ। मैं बिल्कुल टेप के साथ में, क्योंकि ये जो लुक था मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रही थी। ऑब्वियसली आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट भी रख सकते हैं, थोड़ा सा राउंडेड लुक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं काफ़ी शार्प सा इसको लेके जा रही थी बाहर की तरफ से ना। सो सिर्फ बॉटम पे मैंने ये लगाया एंड टैप करके लगा रही हूँ कि मेरा कलर पिगमेंटेशन आए। सो टेप के साथ ही साथ मैं जा रही हूँ एंड देन इसके साथ ये पिंक कलर लगाने लगी हूँ। So I'm going for a very sharp look here. So you can round this off. You don't have to do it like I've done it. You can change the placement of your colors. But I've gone in with a dark color from the P. Louise palette and I've tapped it into where I wanted my color. You can see I've not blended it out. And then immediately I've gone back in with another color, which is a pink one from my Jacqueline Hill palette, and again I'm tapping this on. I haven't blended anything out, so that is how I'm getting my pigment, the color payoff. And once I've applied that, now just at the top corners here I'm just using a slightly lighter pink now and I'm blending that color out, but you can see the angle that I'm keeping it in. Like I said, this is the angle I was going for, so you don't have to do it like this. You could apply it obviously in the placement you want to. सो यहाँ पे मैंने दोनों कलर्स ऐड कर दिए थे, फिर मैंने जो पिंक है उसको थोड़ा सा स्लाइटली ब्लेंड कर दिया एक लाइटर पिंक के साथ। कलर की जो पिगमेंटेशन है ना ऐसे ही आपके पास आती है ना। वो जो अपना जो कंसीलर है वो जो हाश है जैसे वो सारी थोड़ी सी ब्लेंड कर रही हूँ। So to get your pigmentation, you just need to make sure that you're adding your concealer on and then you're going in with the colour, tapping it in and then blending away. Now you can see I've gone back to all my first colours again and I'm going in with a bit more depth of colour now. I'm going in with the brown again, the pink again, and I keep going back and forth until I get a good blend and until I've got a good colour of pigmentation there. So then I'm using my Pat McGrath palette. I haven't used this a lot, but I do love this. So I've just gone in with that very first colour. It was like a shimmery colour. And what I'm doing is just tapping this on. So I wanted this on most of the eyelid. Now you can see I'm overlapping the eyeshadow a little bit. So that's not a mistake. I'm deliberately doing that. And then what I'm going to do is then blend in the colours again. And that way you get a nice smooth blend. So यहाँ पे मैंने पैट मैग्राथ का आई शेडो इस्तेमाल किया, शिमरी सा है तो उसको इन कॉर्नर्स पे लगा दिया। अब जानबूझ के मैंने उसको थोड़ा सा आई शेडो के ऊपर लेके गई हूँ एंड उसको फिर मैंने ब्लेंडिंग किया। आपकी ब्लेंडिंग ऐसे ही अच्छी होती है, अगर वहाँ पे नहीं तो सेपरेशन आ जाती है। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप बार बार अपना कलर टैप कर रहे हैं, उसको आहिस्ता सा ब्लेंड कर लें। लेकिन जब भी आप कोई नया कलर ऐड करते हैं फिर वापस आप जो पहला कलर आपने ऐड किया ना उसको आपने ज़रूर जाके फिर दोबारा लगाना है टैप करके एंड उसको ब्लेंडिंग करनी है। यहाँ पे मैंने बहुत दफ़ा ये किया था इसलिए इसकी ब्लेंडिंग बाद में सही आ गई थी। So you can see I keep going back and forth. I'm building up that pink colour, I'm building up the brown and all the colours that I've added, and I keep going back and forth and I'm blending it out. I'm then just adding on a little bit of black eyeliner. I didn't want a full eyeliner. This is just, I was going to apply my eyelashes, so I've just added on a little bit, but I do touch up the eyeliner afterwards.
सो पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आईलाइनर लगा दिया एंड देन आहिस्ता आहिस्ता अपनी टेप उतार देनी है, फेस को क्लीन कर ले एंड देन अपना जो स्किन केयर है वो आप इस्तेमाल कर लें. So the inner corners I just went in with my pencil. This is from Peaches and Cream, but you can use any eyeliner pencil that you're happy with. So I like to do this bit before I actually start doing the base and things like that, just to make sure if I've got any mistakes I can clean them up. So I'm going in with my Ola Henriksen Vitamin C Serum now. I've been big on skincare for quite a while, but I haven't always been showing it in the videos, but I thought I'd better start showing it so that you guys know exactly what I do. It doesn't have to be these products, so please don't think that you have to actually buy these products that I'm using. Just skincare is really, really important, so you just need to focus on that. I'm going in with the same Vitamin C eye cream as well. सो स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मैं काफ़ी ज़्यादा स्किन केयर करती हूँ, लेकिन हर वीडियो में दिखाती नहीं थी, लेकिन अभी ऑब्वियसली मैंने सोचा कि आपको हर वीडियो में दिखाया करूँगी. ये जो प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किए ज़रूरी नहीं है कि आप यही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कोई विटामिन सी कोई सीरम है या हाइलुरोनिक एसिड, फिर मैंने आई क्रीम इस्तेमाल किया. अभी मैं अपनी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करूँगी. दिस इज़ एनीवन आप कर सकते हैं. फिर इसके बाद मैंने सन क्रीम लगाई थी एंड देन अपना प्राइमर लगाया था. सो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट के बीच पे मैंने टाइम लगाया था. यहाँ पे पता नहीं चल रहा, लेकिन मैंने हमेशा टाइम उस पर छोड़ा है कि वो जज़ब हो जाए. So I went in with my eye cream and then I went in with my sun cream, and I've also used my moisturizer, and then I'm using my e.l.f. putty primer here, which I absolutely love. And now I know I've applied a lot here, but I really love the way this works. And then I really using circular motions is blending this out into the skin. Now between each step of skincare you have to leave a few minutes. Obviously in the video you can't see that, but I left a good few minutes in between. I was putting the eyelashes on, cutting the eyelashes down, putting the glue on, things like that. So you just need to make sure you leave time in between each facial product that you put on. Now I'm color correcting with my Makeup Forever palette, which I'm absolutely loving, and I've seen on Instagram a lot of people tagging me that they've actually bought the product as well, so that makes me really happy as well. I'm sorry I'm making you spend a lot of money as well. And now I'm going in with my Kryolan paint stick. सो मैंने सारे प्रोडक्ट्स लगा के फिर मैंने थोड़ी सी कलर करेक्शन की है. मेकअप फॉरएवर का पैलेट इस्तेमाल किया, फिर मैंने क्रायलॉन की पेंट स्टिक इस्तेमाल किया, पूरे चेहरे पे लगा दिया. एंड देन इस दफ़ा जो कॉम्बिनेशन था वो था मेकअप फॉरएवर की HD फाउंडेशन. सो वो मैंने इस्तेमाल की है. 2 फाउंडेशन हमेशा मैं यूज़ करती हूँ, स्पेशली अगर क्रायलॉन इस्तेमाल कर रही हूँ. So my combination this time was Kryolan paint stick with the Makeup HD foundation, and I absolutely loved this combination. Now it works differently on different skins, so please, obviously, I just want you guys to know that, you know, not everything will work on every single person, so you just have to figure these things out. It does come with experience, and obviously I'm going to be hopefully inshallah doing a course soon. I'm going to tell you everything about that as well. So I've applied it all with a brush first, and then I'm using my damp beauty blender and I'm blending this all out. I have got the colors. I think I'm going to check the video again. I will add the colors if I haven't. But this combination was really pretty, and there is such a big difference when you use just one foundation. I've done it before as well, but when you double up your foundations and the combination, it just works so well, and it becomes really long lasting, and it looks amazing. So मैंने obviously सारी ब्लेंडिंग कर लिया. फिर अभी मैंने डार्क शेप का शेप टिप कंसीलर इस्तेमाल किया. ना ये कलर जो है ये मैचिंग है, लेकिन इनर कॉर्नर्स पे मुझे थोड़ा सा वाइट चाहिए था, लाइट जो होता है ना, तो वहाँ पे अभी आप देखें कि मैंने वाइट बेस यूज़ किया. सो वो अभी आपको 2 सेकंड में दिखाती हूँ. So I'm going in with the tape shape concealer. Now that one was pretty much matching her skin tone, so then I wanted it lighter on the inner corners. So I've actually used 2 different ones, but I'm going to lighten this even further in a minute, and I'll show you what I add. But I wanted that, you know, that very light under eye. Sometimes a lot of people do that, and I don't always do that. I don't like doing it with my powders too much either, but that's what I was trying to do. So I figured out a way of doing it, so I'm going to show you what I did in a few minutes. So I'm contouring. You've noticed that I've been using this palette. So this, I'm absolutely loving how this palette contours. You can use this for so many different things. So it is multi-purpose, this palette. It is really nice. Now you've noticed that lately I have been contouring by just doing a soft contour and not drawing on lines and things like that. So यहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग किया है वही मेकअप फॉरएवर जो पैलेट है उसके साथ. एंड आपने नोट किया होगा कि लास्ट फ्यू वीडियोस में मैं काफ़ी सॉफ्ट कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, कोई लाइंस नहीं ड्रॉ करी, बस वहीं पे जहाँ पे मुझे प्रोडक्ट चाहिए मैं ब्लेंड करके तो उसकी शेप ले आती हूँ. देन मैंने अभी ऑब्वियसली नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ, एंड ये स्मॉल एक ब्रश में इस्तेमाल करूँगी.
So I'm just contouring the nose as well, and I'm using the same product, but what I've done is just got a slightly smaller, flatter brush now, just so that I've got a bit more control of the product. When you're blending out your contour, it just makes a really nice difference. Now you can see this is where you kind of like can correct your color to the foundation as well. So even if you use a really light foundation or it didn't match properly, once you've contoured, it all comes together. So I've sprayed with the Professional, the Benefit spray, and now I'm going to go in and blend out my contour. So I'm using my Real Techniques brush here, and I'm just tapping away. I'm doing the light concealer now, and I'm just tapping away and shaping that face now. So मैंने सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल किया है, प्रोफेशनल है स्प्रे जो बेनिफिट से है, एंड वो बहुत ही उसकी फाइन सी मिस्ट होती है, मुझे वो बहुत पसंद है. एंड ये रियल टेक्निक्स का ब्रश मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड इससे मैं अभी ब्लेंडिंग करूँगी. So I love using this particular brush, and again I know I say this in every video, but I do need to do a brush video for you guys as well. I will do that soon for you, inshallah. But I do actually prefer using my brush now instead of my beauty blender straight away. I find that it just pats in really, really nicely, and you get that really kind of like flawless look when you're using this brush. So I'm using a slightly smaller fluffy brush now and blending out any harsh edges of that nose contour as well. So just once over with my small beauty blender now, and then I'm going to go in with powder. So it's important here that you do kind of like buff it out a little bit before you actually do the powder, so you don't want any creases or anything like that. Now here I'm using a little bit of white base from P. Louise. So what I'm doing is right in the inner corners, just to brighten up the eye area. Not a lot of product here, just with a brush I've just applied it and I'm blending that away. So यहाँ पे इनर कॉर्नर पे मैंने वाइट बेस इस्तेमाल किया, सिर्फ इनर कॉर्नर्स पे आंखों के नीचे की वो ब्राइटनेस आ जाए, एंड इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया था फाइनल लुक में, मतलब ना स्पेशली असल में जब आप देख रहे थे. तो ये पी लुइस का बेस है, सिर्फ थोड़ा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया ना. अभी मैं अपना हडा ब्यूटी का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, पाउडर पफ से लगा रही हूँ, एंड काफ़ी ज़्यादा पाउडर यहाँ पे लगा के एंड देन फिर बेकिंग करूँगी. So I've gone in with the Huda Beauty pound cake powder here, and I'm using a a puff to apply it. Now puffs differ, to be honest with you. With this puff, what I noticed was normally I blend out all the powder away, but this one is actually a new one that I was using, and it kind of like sat on the skin a bit more, so I didn't bother blending all away. I just let it sit there instead of trying to get rid of all that powder. So this is what I mean, is sometimes when you use new things, you just need to adapt to it, and you just need to stay on top of it and not kind of like lose your focus. So I could have kind of like freaked out here and thinking, oh my god, it's not blending away, but I left it there. So I didn't, you know, I kind of like just let it do its baking, and then you'll see that the finish was absolutely flawless. So that was actually due to my puff that I was using and not actually the technique I was going for today, but that's how it turned out. So then I'm going in and I'm doing a little bit of powder contouring, and I'm using my MAC Studio Fix NC40. So पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है हडा ब्यूटी का ना. ये जो मैंने पफ इस्तेमाल किया था ना, ये थोड़ा सा नया था एंड मैंने पहले यूज़ नहीं किया होता. तो इससे नॉर्मली आपने नोट किया होगा कि मैं पहले पाउडर को सारा ब्लेंड कर देती हूँ, फिर ऐसे बेकिंग करती हूँ, लेकिन इस पे पाउडर काफ़ी चेहरे के ऊपर रह रहा था, तो फिर मैंने उधर ही छोड़ दिया था. तो बाद में ब्लेंडिंग करूँगी, लेकिन लुक बहुत अच्छी आ गई थी. फिर मैंने थोड़ा सा पाउडर कंटूर किया. अभी आइज़ के नीचे जो डार्क ब्राउन सा थोड़ा सा आउटर कॉर्नर्स पे मैंने रखा था, एंड देन थोड़ा सी लाइट कलर यूज़ करके तो इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ. So just underneath the eyes, I've just gone in with a slightly darker brown first, just on the outer corners, and then I've gone in with like a slightly orangey brown. I didn't go for the pink this time. So I'm just blending that out, and then what I'm using is my Charlotte Tilbury Flawless Finish Powder in Fair, and what I'm doing is so I've sped this bit up a little bit, obviously. So what I'm doing is actually pressing the powder in, not sweeping it away. So all that powder is actually going into the skin. So Charlotte Tilbury का मैंने पाउडर इस्तेमाल किया है, इसको जो छोटा ब्रश था उसी से इस्तेमाल करके तो उसको ब्लेंड कर दिया, लेकिन मैंने प्रेस करके इसको किया है, मतलब स्वाइपिंग मोशन से नहीं. तो जो पाउडर आंखों के नीचे था उसको मैंने ब्रश इस्तेमाल किया और उसको प्रेस करके मैंने उसको ब्लेंड किया. फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना ब्लशर लगा रही हूँ एंड हाइलाइटर.
So then I'm going in with my blusher. I went in a little bit heavier. I wanted to go for that slightly heavier pinky look on the cheeks now. And then I'm just going to obviously blend this out and then add my highlighter as well. So before that, I'm just spraying the face. I've powdered it loads. So I'm going in with my MAC Fix Plus. सो इतना ज़्यादा हमने ऑब्वियसली पाउडरिंग की है, ब्लशर लगाया है, पाउडर बहुत ज़्यादा लगाया है. सो अभी मैंने इसको एक स्प्रे किया है मैक का फिक्स प्लस जो होता है कि थोड़ी सी स्किन की जो हाइड्रेशन है वो वापस आ जाए. सो इसको थोड़ा सा टाइम दे, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने स्प्रे किया. सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ड्राई कर देती हूँ एंड देन मैं अप्लाई करती हूँ हाइलाइटर. So I let this spray, normally I'll kind of like waft it with a fan, and you can see me doing this now. I think I used an eyeshadow palette here, and then I go in with my highlighter. So obviously you don't want to go in when it's really, really wet. So I'm just going in with a flattish brush and I'm just using my highlighter now. So again, just my final blend now underneath the eyes, just bringing this down, fluffing it out a little bit. So lips, as usual, I just got my model to do them quickly. Obviously when I do my brides, I do the lips myself, but in these shoots we're always short on time and it's much quicker just for me to kind of like get my hair kit out while the model just does her lips. So we just used a combination of the MAC lip liner and then the Kim K lipstick. सो लिप्स को हमने थोड़ा सा न्यूड सा ही रखा था. मॉडल को ही मैंने बोला था कि अपने लिप्स जल्दी से करे. मैं इतनी देर में अपनी किट निकाल रही थी क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं ब्राइड्स करती हूँ सारा कुछ खुद ही करती हूँ, लेकिन जब शूट्स कर रही होती हूँ तो ये होता है कि थोड़ी सी वो जल्दी होती है. तो मैंने इतनी देर में अपनी बालों की किट सॉर्ट आउट कर ली थी एंड देन ऑब्वियसली लिप्स रेडी थे. सो फाइनल में ऑब्वियसली जो फाइनल टचेस होते हैं, यहाँ पे मैंने आई लैशेस क्लीन की थी, मस्कारा लगाया था, जो आई लाइनर की जो लाइन थी उसको फिक्स किया एंड देन जो एक्स्ट्रा अगर कुछ भी जैसे शिमर्स वगैरह लगाना था वो मैंने किया. So finishing touches, obviously what I do is I clean up the eyelashes. I went over the eyeliner again and then added on any shimmer that I need to add on, which I always go in, but again I didn't use my finger here. I went in with a small brush because now I didn't want to make a mess or ruin any of the blending I'd already done. So this just stayed on the very inner corners just to give it that extra pop. Just added a little bit of the gold from the palette as well, just underneath on the inner corners of the eyes. So this is pretty much the full tutorial. I'm going to have the hair tutorial coming up as well, so I will have that up soon. Let me know in the comments what you thought, and I hope this tutorial has been helpful for you guys. यहाँ पे आप फिनिश लुक देख सकते हैं. कमेंट्स में मुझे बताना आपको कैसे लगा. होप आपको सीखने के लिए कुछ मिला यहाँ पे. कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगा, एंड इंशाल्लाह इसका हेयर स्टाइल भी लेके आऊँगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इंशाल्लाह विल सी यू सून. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.